Hello, my sparkling stars. Once again, welcome back to a session of mathematics for grade 7. और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 9, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना वार्म अप करेंगे, राइट? तो वार्म अप में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिसिंग लेंस इन द फॉलोइंग. इन दिस क्वेश्चन हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है और ध्यान से देखेंगे ट्राइंगल की 2 इक्वल साइड्स दी हुई हैं एंड साथ में पेरीमीटर दिया हुआ है. व्हाट इज मिसिंग हियर? द थर्ड साइड इज मिसिंग. अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स. तो यहाँ हमने थर्ड साइड को x एज्यूम किया और हमने इन दो साइड्स का सम किया which is 6 plus 6 that is equal to 12. अब 20 में से 12 को अगर टेक अवे करेंगे we will get 8. So the value of x is 8 centimeter. Right. Come to the next one. Same pattern पे इस क्वेश्चन को करेंगे. We will add all the given sides और जो एक मिसिंग साइड है हमने उसको x assume किया और उसके बाद जो ये साइड्स का सम आएगा उस सम को हम टोटल पेरीमीटर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 40 minus the sum of all these sides, right? 12 plus 12 is 24 and 10 और add किया तो बन गया 34 and 34 plus 3 is 37. तो 40 minus 37 you get 3 centimeter. तो ये x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आएगी. तो इस तरह से हम अपने सम को बहुत जल्दी कर देते हैं एक सिमेट्री रूल फॉलो करके. Come to next question. Find the perimeter of each of the polygons whose sides are given. तो ये सारी sides दी हुई हैं. The rule says कि जब हम perimeter निकालते हैं side का sum आ जाता है. तो we will add them and we get the answer for each part. Look at the next question. Find the perimeter of the given figure. All the lengths are in meters. तो हमें सारी lengths दी हुई हैं, right? And हमने इन सारी sides का क्या करना है? सम करना है. गुड गोइंग. नाउ वी गेट द पेरीमीटर एंड रिमेंबर हम जब आंसर लिखेंगे तो उसके बाद मीटर्स जरूर लिखेंगे. नाउ मूविंग फर्दर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर. तो हमें पेरीमीटर के बारे में पहले जानेंगे. पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी क्लोज्ड फिगर होती है तो क्लोज्ड फिगर का मतलब उसके पास एक बाउंड्री होगी और उस फिगर की पूरी साइड्स का हम जब सम ले लेते हैं बाउंड्री का तो हम बोलते हैं ये पेरीमीटर है. सो पेरीमीटर रेफर्स टू द बाउंड्री ऑफ अ फिगर एंड पेरीमीटर ऑफ एनी पॉलीगन इज द सम ऑफ द साइड्स ऑफ ऑल द लेंथ्स. ओके, नाउ दिस इज अ ट्राइंगल. इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? x plus y plus z. And when you talk about a square, square has 4 equal sides. So we say side plus side plus side plus side, which is 4 multiplied by side. हम इसको इस तरह से लिखते हैं. And then we come to a rectangle. अब rectangle में हमारे पास 2 sides हैं जिसकी length दी है and we have 2 sides with a breadth. So we will find the sum of all the sides. We say 2 times length and 2 times breadth. और आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बन जाएगा 2 times length plus breadth. Got it? And when you talk about a circle, circle की जो बाउंड्री होती है उसको एक स्पेशल नेम दिया जाता है. We call it circumference. And the perimeter or the circumference of a circle जिसका हमें रेडियस मालूम है r या हमें डायमीटर मालूम है d. If you know the radius, तो हम उसका circumference निकालेंगे 2 pi r. और अगर हमें diameter मालूम है तो हम pi multiply d लिखकर अपने circle का perimeter calculate करते हैं. Now we start with the example. If the perimeter of a triangle PQR is 22 centimeter and हमें 2 lengths दी हुई है. First length is 5.7 and the second length is 11.9. You have to find the missing third length. So we will take 2 sides. इन दोनों को हम add करेंगे and then we know कि 3 sides के sum को perimeter बोलते हैं.
So we say perimeter that is equal to 22 centimeter is equal to 5.7 plus 8.9 and it gives you the third missing value. तो इन दोनों को ऐड किया हमने, इनको ऐड करके हमें मिला 14.6 एंड 14.6 को अगर हमने 22 से सब्ट्रैक्ट किया we get the third side. Third side आ गई 7.4 centimeter, right? So we say the length of the third side is 7.4 centimeter. Now come to the next one. Find the perimeter of a rectangular garden whose length is 25 meter and the breadth is also given, which is 15 meters. Length मालूम है, breadth मालूम है, दोनों की unit same है, तो हमने simply formula apply कर देना है 2 times length plus breadth and we get 80 meter as the perimeter of a rectangle. Come to the third example. A triangular scarf of the dimension. See, this is 80 centimeter, 70 centimeter and this one is 1 meter. It is bordered with a lace. If the lace cost rupees 15 per 10 centimeter, find the cost of the lace. तो बॉर्डर में जो आप लेस लगा रहे हैं, पहले हमें ये पता लगाना है कितनी लेस वहां पर लगेगी, वो हमें पैरामीटर से मालूम पड़ेगा. So we are going to find the perimeter. See here. Now this was 1 meter जिसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें बॉर्डर मिल गया 250 सेंटीमीटर. अब 10 सेंटीमीटर बॉर्डर की हमें कॉस्ट दी हुई है 15 रुपीज, तो 250 को 10 से डिवाइड किया, we get 25 और इस 25 को 15 से मल्टीप्लाई किया. विल कम टू नो दैट द कॉस्ट ऑफ द लेस, जो हम बॉर्डर पे लेस लगा रहे हैं उसकी कॉस्ट हो जाएगी रुपीज 375. Find the diameter of a circle whose circumference is 125.6 meters. So what will you do? You will put the value of d is equal to, आपको मालूम है circumference is equal to pi d होता है, तो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो वैल्यू है circumference की divided by pi, और pi की वैल्यू होती है 3.14 and we divide and we get the length as 40 meter. That means ये diameter है 40 meter, और अगर radius calculate करना है तो आप क्या करेंगे? We are going to divide it by 2. Got it? So here make sure this is in meter, so your answer comes in meter. Correct? Moving further, take another example. The diameter of a wheel of a car. एक कार है, उसकी wheel का diameter दिया हुआ है 84 centimeter. So how many revolutions will it take to travel 264 kilometer? So distance covered is 264 kilometers, जिसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, राइट? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 100,000 से मल्टीप्लाई किया एंड देन डिस्टेंस कवर कितना होगा? That is equal to कितने revolutions हैं multiply by circumference of the wheel. Now look at the formula. हमें distance covered मालूम है. We are going to write that it is 264 multiply 100,000 and n is the number of circles. Pi की value हमें मालूम है and 84 is the diameter. अब value put करेंगे और ये unknown n की value calculate हो जाएगी and we get 1 lakh revolutions, that is 100,000 revolutions are taken by the wheel to cover the distance, that is 264 kilometers. Got it? अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर. तो फर्स्ट क्वेश्चन है the sides of the triangle are given and the perimeter is also given which is 42 centimeter. हम क्या करेंगे? 3x plus 4x plus 5x is equal to 42 and when you add it we get 12x is equal to 42. अब जब x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो x को एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 4 से और एक बार 5 से and we get the 3 sides. Got it? Next exam question is find the radius of a circle whose circumference is given. अब हमें मालूम है पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बाद दिया है पाई की वैल्यू 22/7 तो आप 22/7 पुट करेंगे. If the value is not given then you are going to put it as
3.14, right? So here we know what is the formula for the circumference और radius निकालना है तो circumference की value 2 pi r रखेंगे. Circumference 28.6 लिखा, 2 multiply 22 by 7 and r is missing. We'll calculate it. So we'll observe all the questions are on the base of the examples we have done. एक और देखेंगे. Find the perimeter of isosceles triangle जिसका बेस मालूम है 27 सेंटीमीटर and length of each equal side is 18 सेंटीमीटर. अब isosceles triangle का रूल होता है कि two sides equal है, तो equal sides हमें 18 दिया है और बेस हमें दिया है 27. Now you can add it और add करके हमें क्या मिल जाएगा? Perimeter. Got it? Then read the next question. If the length and breadth of a picture are 13.6 centimeter and 9.4 centimeter, find the length of the wooden frame required to frame the picture. एक फोटो को फ्रेम करने के लिए हमें एक वुडन फ्रेम चाहिए जिसकी हमें लेंथ मालूम है और ब्रेथ मालूम है. So we are going to find the perimeter here, right? And this way do the remaining questions yourself. अब हम आते हैं एरिया पर. So the measure of the region of the figure that is enclosed within the boundary is called its area. Now the units are chosen according to the size of the area that has to be measured. अगर छोटा एरिया है तो हम उसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे. And if you have a plot, if you have a house, if you have some land, तो एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में ही कैलकुलेट होगा. Large areas such as the field are expressed as the areas. Now we come at areas of regular figures. So area of regular figures can be calculated using a grid square paper. यहाँ पर आपके पास स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं और इन बॉक्सेस को यूज करके हम एरिया कैलकुलेट करते हैं. सपोज आपने इस पिंक कलर के बॉक्स का एरिया निकालना है and each square box is 1 centimeter square. So we'll count there are 8 squares. हम बोलेंगे इसका एरिया है 8 centimeter square. You can write it in these two ways, right? So method of counting square is very time consuming. बहुत मेहनत लगती है. अगर आपकी बहुत बड़ी फिगर है तो आप बस boxes count करते रह जाएंगे. So we have different other methods to find the areas. तो सबसे पहले हमारे पास ये रेक्टेंगल है. इस रेक्टेंगल का एरिया आपने कैलकुलेट करना है. We'll see कि इसकी लेंथ कितनी है. इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर एंड इसकी ब्रेथ कितनी है. यहाँ ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, राइट. अब अगर हम इन बॉक्सेस को काउंट करेंगे so you can count there are 24 boxes. बट मैं आपको शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगी कि इसका एरिया विदाउट काउंटिंग द बॉक्सेस कैसे निकालेंगे. So we are going to write length multiply by breadth and this becomes the area. तो यहाँ पर हमने 6 multiply 4 किया and we get 24 centimeter square as the area. सेकेंड फिगर हम लेंगे स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल साइज की है. ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल इन द स्क्वायर, राइट. सो द एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी टेकन एज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. यहाँ पर 4 लेंथ है 4 ब्रेथ है. सो वी विल राइट 4 मल्टीप्लाई 4 और एरिया आपका बन जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. आओ अब एग्जाम्पल लेते हैं. लुक एट एग्जाम्पल नंबर 6. Find the area of a rectangle whose length is given and the breadth is also given. So we'll just multiply length and breadth and we get the area as 120 centimeters square and each side of a square garden is 30 meter. What is its area? अगर आपने उसका एरिया निकालना है, स्क्वायर है तो उसका एरिया का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? 30 times 30 side times side and we get 900 centimeters square. Got it? Now after this find the area and the perimeter of a rectangle of sides 8 centimeter and 4 centimeter. Same formula, length times breadth and we get 32 centimeter square.
अब पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला था 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड वी राइट 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ एंड वी गेट 24 सेंटीमीटर. मेक श्योर जब भी पैरामीटर निकलेगा तो यूनिट सेंटीमीटर, मीटर्स ऐसे होगी और एरिया में इट विल बी स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, देन मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, लाइक दिस. ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं. अ वायर इज यूज्ड टू मेक अ स्क्वायर of side 15 centimeter. The same wire is then used to make a rectangle of length 12 centimeter. Which of the two has greater area? तो हमने लिखा perimeter of square का formula 4 times s and हमें मिला 60 centimeter. अब आपने इसकी बाउंड्री की बात कर ली and it is given perimeter of square और perimeter of rectangle equal है. रेक्टेंगल में हमें लेंथ मालूम है, रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, सो वी आर गोइंग टू राइट 60 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 12 प्लस b. गॉट इट? एंड हमने फाइनली b की वैल्यू निकाली व्हिच कम्स आउट एज 18 सेंटीमीटर्स. सो वी गॉट द ब्रेथ आ गई 18 सेंटीमीटर. अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे विच इज 15 टाइम्स 15 एंड सेकेंड टाइम हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट किया, दोनों के एरियाज मिले एंड नाउ द क्वेश्चन वाज कौन सा एरिया ज्यादा है. सो वी से द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इन दिस केस. गॉट इट? अब हम आते हैं एक और रियल लाइफ एप्लीकेशन पर एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज देयर. If find the cost of carpeting 24 meter long and 18 meter broad hall. तो एक हॉल दिया है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है and with 80 centimeter white carpet at the rate of 7 rupees per meter. तो पहला काम करेंगे हम अपने हॉल का एरिया कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद कारपेट की हमें लेंथ नहीं मालूम, हमने उसको x एज्यूम किया और कारपेट की ब्रेथ मालूम है. अब ब्रेथ भी हमें सेंटीमीटर्स में दी है तो हमने इस ब्रेथ को पहले 100 से डिवाइड किया और इस ब्रेथ को मीटर में कन्वर्ट किया. एंड व्हाट डू यू सी? द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड कारपेट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द हॉल. पूरे हॉल में हमने कारपेट बिछाना है, इसलिए 0.80 मल्टीप्लाई बाय x is equal to 432. तो x की वैल्यू आ गई 432 divided by 0.80 and it becomes 540 meters. So length of the carpet is equal to 540 meter. अब cost of carpet per meter हमें ₹7 दिया हुआ है, इसको 7 से multiply किया and we got rupees 3,780 as the total price of the carpet. Right? So come at example 11. The sides of a rectangular plot are in the ratio 6:4 and the area of the plot is also given. कितना दिया हुआ है? 9,600 meters square. So find the cost of fencing per round the plot with barbed wire at a rate of rupees 3.50 per meter. तो सबसे पहली चीज हमें साइड्स का रेशियो दिया हुआ है and then we know the area of the plot is length time breadth, so we'll write 6x multiply 4x meter square is equal to the area. हमें area 9,600 दिया है, so we'll calculate the value of x. यहाँ हमें मिला x की वैल्यू 20. अब जब x की वैल्यू मिल गई तो x की हेल्प से हम लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट करेंगे. so length becomes 120 meter, 6 multiply 20 and breadth becomes 4 multiply 20, that is 80 meter. अब लेंथ और ब्रेथ मालूम करने के बाद हम निकालेंगे पैरामीटर and parameter comes out as 400 meters. Now that means कि हमें 400 meters की वायर चाहिए और cost of wire per meter हमें दिया हुआ है rupees 3.50. So we'll multiply it with 3.50 and we get 1,400 rupees, right? And this is your answer. Now next question is find the areas of the following figure. So here this entire length is given 5 meter, ये 2 meter है तो ये आपका बचा 5 minus 2, that is 3. Similarly this is 3
दैट मीन्स ये भी 3 है, अब ये टोटल 6 है तो ये भी 6 हुआ, राइट। एंड दिस वे वी विल फाइंड द एरिया ऑफ फर्स्ट बॉक्स दैट इज x and second box that is y. So we'll write the area of the given rectangle is first rectangle and the second rectangle. First rectangle का area होगा 5 multiply 6 and second rectangle का area हुआ 3 multiply 2 and finally we get the total area which is 36 square units. Got it? Now we move further and we'll take this figure. इस figure को हमने दो parts में horizontally divide किया. पहले first part का area निकालेंगे and then we find the area of the second part. First part का area होगा 2 multiply 8, second का होगा 10 multiply 4 and then we added, we get the area as 56 meters square. And now we have an exercise. आप इसको खुद करने वाले हैं. Now we'll take the area of rectangular pathways. Suppose आप किसी गार्डन में जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, तो वहां जाकर आप ऑब्जर्व करते हैं किसी पार्क में साइड्स में पाथवे होता है जॉगिंग के लिए, वॉक के लिए, और कुछ कुछ पार्क्स ऐसे होते हैं जिसके सेंटर में इंटरसेक्ट करती हुई 2 रोड्स होती हैं पाथवे की, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल. तो हम उन पाथवेज को किस तरह से डील करते हैं दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर. सो फर्स्ट थिंग इज pathway inside the rectangular shape. When the rectangle is drawn inside the given rectangle, the path is formed and the width of the path is half the difference of their length or breadth of the two rectangles. तो यहाँ पर हम observe करते हैं the path is 2 meter wide and it is built inside and along the boundary of the rectangular garden with length 20 meter and breadth 35 meter. You have to find the area of the pathway. तो सबसे पहले हमने ये पूरा एक गार्डन बनाया, राइट? और ये जो शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट हमें क्या शो कर रहा है? ये आपका पाथवे शो कर रहा है. अब अगर ये वाली पूरी लेंथ 30 मीटर्स है और ये विड्थ हमें दी हुई है 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, तो दैट मीन्स 30 मीटर में से 4 मीटर सबट्रैक्ट हुआ एंड वी आर लेफ्ट विद 26 मीटर, राइट? इसी तरह से अगर ये टोटल लेंथ हमें 20 दी है तो 20 माइनस 2 एंड माइनस 2, सो वी गेट इट इज 16 मीटर. अब हमने ये दोनों लेंथ ली तो ये वाला पार्ट हमें गार्डन का मिल गया, राइट? पहले हम टोटल एरिया निकालेंगे, आउटर एरिया, फिर हम इनर एरिया निकालेंगे और इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल देंगे. तो ये जो डिफरेंस आ जाएगा दैट डिफरेंस इज द एरिया ऑफ द पाथ. गॉट इट? अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, व्हेन पाथ्स आर आउटसाइड द रेक्टेंगुलर शेप. तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है PQRS और इसका पाथ आउटसाइड द गार्डन दिया हुआ है और आपने पाथवे का एरिया निकालना है. तो पाथ का विड्थ मालूम है हमें, तो यहाँ पर हमारे पाथ की विड्थ सपोज 5 है, तो हम क्या करेंगे कि इस लेंथ में 5 + 5 ऐड करें, सो दैट विल बिकम 80 + 10 दैट इज 90. एंड इसी तरह इस 95 में 5 + 5 दैट इज 10 ऐड किया तो आपको लेंथ मिल गई 105 मीटर, ब्रेथ मिल गई 90 मीटर. नाउ यू विल फाइंड द आउटर एरिया, यू विल फाइंड द इनर एरिया. दोनों का डिफरेंस निकाला, हमें मिला 1850 मीटर स्क्वायर. दिस इज योर आंसर, राइट? एंड दूसरी कंडीशन लेते हैं, व्हेन द पाथ्स आर क्रॉसिंग ईच अदर, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और ये दोनों पाथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने ऑब्जर्व किया ये वाला एरिया रिपीट हो रहा है, राइट? अब अगर इसकी लेंथ देखें तो ये लेंथ ऑफ दिस गार्डन दैट इज 75, और अगर इसकी लेंथ देखें इस वाले पाथ की विच इज इक्वल टू 55 मीटर, राइट? सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? हमने 75 × 5 किया तो हमें इस पाथ का एरिया मिला. इसी तरह से हमने 55 × 5 किया
तो हमें इस पार्ट का एरिया मिला, बट एक पार्ट विच इज 5 मल्टीप्लाई 5, दिस इज रिपीटिंग, तो इन दोनों एरियाज को ऐड करके हम इस 25 को सबट्रैक्ट कर देंगे। Got it? So this is how we have done this question. तो फर्स्ट एरिया आया, सेकेंड एरिया आया और उसमें से 25 को सबट्रैक्ट किया। सबट्रैक्ट करने के बाद हमें ये एरिया मिला विच इज द एरिया ऑफ द पाथवे, एंड हमने इसको 130 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला ₹81,250. दैट इज द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथवे. करेक्ट? नाउ वी विल generalize it. So from the above example, we have arrived to a general formula to find the area of the pathway across each other. How will you find it? Area of pathway क्या होगा? First pathway को add किया, second pathway को add किया, and then we subtract the common area. Correct? Now we have an exercise based on it, which I want you to do yourself. Now coming to area of a parallelogram. So what is a parallelogram? A parallelogram is a quadrilateral, right children, which has opposite sides equal and parallel. We talk about rectangle, rhombus, square. They are special types of parallelograms. Now we'll find the area of a parallelogram using a grid paper. तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ पर एक parallelogram draw किया. Now we observe कि ये triangle है. And then we have this triangle also. Okay, so parallelogram is made of two triangles on either side with a rectangle in the middle. तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, I'll draw it again. हमने इस parallelogram को observe किया, तो ये वाला triangle और ये वाला triangle, two triangles हो गए, और इसके बीच में ये वाली figure which is a rectangle. Got it? Now in this parallelogram you can cut a triangle from the right of the parallelogram and move it to the left. So हमने इस triangle को cut किया और इसको यहाँ पर move कर दिया. Got it? तो हमारे पास क्या figure बची? ये part तो cut हो गया, हमारे पास ये figure, remaining figure आ गई. अब ये figure क्या है? This figure is actually a rectangle, right? So इस rectangle में AB is the base and AF is the height. और हम इस वाले फॉर्मूले को area of rectangle का फॉर्मूला भी कहते हैं. So we say the area of the parallelogram is equal to base multiplied by height, which is same as length multiplied breadth, the area of a rectangle. Got it? Now the height and the altitude of a parallelogram is perpendicular distance between the two bases, and it is not the length of the sides of the bases. That means ये base है और ये side है, but हम इस side की बात नहीं कर रहे, हम इस height की बात कर रहे हैं. So every time remember, जब भी हम parallelogram का area निकालते हैं तो product of two sides नहीं होता. It is always base multiplied by height. Example देखते हैं इसके ऊपर based up. So find the area of a parallelogram whose base is 15 centimeter and height is 5 centimeter. So we'll say base multiplied by height. So it will be equal to 15 multiplied 5, which is 75 centimeters. Now let's find the area of the rhombus and area of the kite. So when you talk about a rhombus is a parallelogram in which all the sides are equal. So area of the rhombus is the product of its base and height. Okay, so we write it as area as base multiplied height. दूसरी कंडीशन होती है जब हमें sides नहीं दिए, height नहीं दी, बट आपके rhombus के two diagonals दिए होते हैं. तो जब हमें two diagonals दिए होते हैं तो area of rhombus हो जाता है half multiply diagonal 1 multiplied by diagonal 2. Similarly, we come to kite. Kite is also a quadrilateral in which two pair of adjacent sides are correspondingly equal.
एडजेसेंट साइड्स का मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है. दैट मीन्स यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है. They are not equal, they are not parallel, so it's different figure from a parallelogram. और जब आप kite का एरिया निकालते हैं, then again we use the formula half multiplied diagonal 1 multiplied diagonal 2. Got it? अब हम आते हैं example 17 पर. Find the area of a rhombus whose diagonals are 16 centimeters and 15 centimeters. So we'll write down half multiply d1 multiply d2 and this comes out as 120 centimeter. Next example is the area of the rhombus is already given. It is 148.8 centimeter square and uska ek diagonal diya hua hai. We have to find the length of another diagonal. So here we'll put the formula. Area of rhombus is half multiplied d1 multiplied d2. So diagonal will be area multiplied 2 upon d1 which comes out as 15.5 centimeter. Now we come at area of a triangle. So area of a triangle can be derived from the formula of area of rectangle. सबसे पहले हमने एक rectangle draw किया, उसमें हमने एक diagonal draw किया, right? और हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये डायगोनल इस पूरे रेक्टेंगल को 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ओके, सो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज कॉमन. दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गए. दैट मीन्स पूरे रेक्टेंगल का एरिया हो गया the sum of 2 triangles or we can say 2 times of 1 triangle. तो ट्राइंगल का एरिया हुआ हाफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल.